फ्रीडम और जॉय, जितना भी हमारा मूवमेंट है सब कुछ उसी के लिए है, हमारी हैप्पीनेस के लिए और हमारे जॉय के लिए. डिवोशन हैज़ बीन वंडरफुल थिंग एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन इन प्रैक्टिस इन दिस कंट्री. बट इसके बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स हैं और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस आ चुके हैं. तो डिवोशन की जो प्रोसेस है उसको मेरा आइडिया है कि थोड़ा अगर हम समझ लें तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती हैं. सो इट्स समथिंग दैट कैन वर्क वंडर्स इन आवर लाइफ. वी जस्ट एटलीस्ट वी अंडरस्टैंड इट हाउ, ताकि हम फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी एम्ब्रेस इट विद कॉन्शियसनेस. और अगर नहीं चूज़ करते तो नहीं चूज़ करते हैं, बट एटलीस्ट हमें समझ तो आए कि है क्या और चीज़ें काम कैसे करती हैं. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट हैप्पीनेस. सो दिस इज़ ऑल, जैसे पेट भरने के बाद दिस इज़ ऑल व्हाट वी स्टार्ट आवर लाइफ्स विद. सो इन दिस सेशन जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है डिवोशन को लेकर के उसको मैं प्रेजेंट करूँगा. सो लेट मी आस्क यू क्वेश्चन. व्हाट यू सी हियर, आई थिंक everybody would claim this is a rope, right? And unambiguously this is a snake that you can see very clearly on this slide. Now if you for example, let's say if you perceive कि ये जो रोप है ये स्नेक है, तो अगर ऐसा परसीव करते हो तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू लीड टू फियर. एंड अगर आप स्नेक को एज अ रोप परसीव कर रहे हो तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू लीड टू फेक कॉन्फिडेंस. इन बोथ दीज केसेस you're not perceiving things as is. So in one case you are having, you're kind of limiting your possibilities, you're suffering. And another case you are kind of just moving with the fake confidence, and that could be disastrous. Maybe it works sometimes, but fake confidence very likely it's going to land you in trouble. So it's very important that we're able to see things as is. So this is where we call when we are not able to see things as is and we perceive one thing as something else, और किसी एक को कुछ और मान लेना, as is नहीं देख पाना, this happens when there is darkness. So darkness, especially when it comes to physical, we call it the darkness. Or when it comes to your capability to perceive or make appropriate mental models of reality, that is called ignorance. So your failure to perceive things as is, that is treated as, or that is considered as ignorance, and ignorance is darkness. So darkness का जो इलाज है, that is light. Okay, so knowledge works as light. So जब कभी भी we are enlightened by knowledge, we perceive things as is. So like when we talk about happiness or joy, so definitely, as we said, either we are in the fearful state or we are in a state of fake confidence. Both these cases, so एक जो fear है वो with its kind of, that's from the beginning to the end, that cause suffering, and fake confidence is very likely to lead to the consequences. So definitely staying in the ignorance or knowledge, staying in the knowledge is important for us to move ahead. So अगर हम आगे बढ़ जाते हैं इसके अंदर और हम बात करते हैं नॉलेज की, तो नॉलेज का जो स्टेट है, there are so many dimensions of life, so much complexity around that कि अगर हम नॉलेज के पाथ में रहते हैं, I'm not saying this is wrong about it, it's absolutely powerful path, and no, there's nothing like being in the knowledge domain. Knowledge का domain definitely is very powerful. It allows us to thrash things out, but generally it's very lonely, and because there's always an angle of perception involved, and not bad though. Actually, it's a very powerful path, as I say. But how many times we can actually perceive things as is, and how much conscious are we? Like, because consciousness is needed in all aspects of our lives. How we interact, what is going to be the consequences of my actions, what do I eat, how do I maintain this body, what to say when. So all those things are definitely they require continuously evolving intellect, and absolutely valuable and powerful.
बट एज ए सेड, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो इंटरेस्टिंग रोल आ जाता है हमारे मन का आ जाता है. वेरी सिंपल एग्जांपल कि हमें मालूम है कि देयर सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट अपना मन जो है बार बार उसको धोखा देने लगता है कि भाई कर ले, क्या रखा है, थोड़ा सा ही तो बचा है, इट्स नॉट अ बिग डील, छोटी सी चीज़ है, अरे हफ्ते भर तो तूने परहेज़ कर ही लिया, थोड़ा सा आज इसको छोड़ दे, क्या फ़र्क पड़ रहा, और कोई नहीं फ़र्क पड़ता है एक बार में. सो इस तरह की हमारे अंदर जो थॉट प्रोसेस रहती है और आता है बार बार. एंड हो सकता है 99 टाइम्स इसको हम छोड़ दें, बट एक बार भी अगर हम कॉन्शियस लाइक वी अलाउ दीज थिंग्स टू हैपन, उसके फिर अपने लाइक फिज़िकल के अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो रहेंगे ही. तो और भी इसमें बहुत सारे और इंटरेक्शन के लेवल पर भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं. विल टॉक अबाउट दैट एट इन सम अदर कन्वर्सेशन एट डिटेल. सो अभी तो यहाँ से थोड़ा मूव करते हैं, तो देखते हैं कि भाई ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, और अभी हम आ जाते हैं दूसरे पाथ के ऊपर, दैट इज़ अ पाथ ऑफ डिवोशन, which actually gives the same results as of the intellect, but however it is relatively, I would say, easy is probably I wrote it wrong. Actually it is simple but not easy, because our intellect generally interfere, and it requires surrender, and of course surrender के अपने रिस्क हैं. एंड दूसरा एक इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, दिस इज़ पाथ फुल ऑफ जॉय, because generally the path of devotion it happens in in a community of people. Generally it's very powerful when it is conducted in the community of people. So moving on with the path of devotion, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है कि once again like in the path of intellect there was always a case of falling down. यहाँ एक दूसरा चैलेंज आ जाता है, because the path of devotion demands surrender, right? And when it demands surrender, there is a significant challenge that people who are kind of in a easy state, you are exposing your vulnerabilities. So ऐसे केस में you are always under risk of being cheated. And yes, अगर आपने गलत और ऐसे लोगों के सामने और ऐसे लोगों के कॉन्टेक्स्ट में सरेंडर कर दिया जो कि they are deeply bound by their physical existence, तो ऐसे में बहुत सा सीरियस चैलेंज हो सकता है. यू आर वेरी लाइकली टू बी एक्सप्लॉइटेड, और जो वास्तव में इफ़ेक्ट्स हैं डिवोशन के, उसके बजाय आपको उल्टे उसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं. सो डेफिनेटली उससे उल्टा जो फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है, एंड इट कैन लीड टू एन एंट्रैपमेंट. सो विल टॉक अबाउट इट इफ in this section a little bit, not much though, but yeah, we'll touch upon how devotion works in our life, because कैसे वो काम नहीं करता है इसकी अलग बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है. Yeah, but generally if it is done in an appropriate manner, it can be wonderful. So let's talk about devotion a bit. So we are going to be discussing the mechanics of devotion. So devotion का जो पहला एस्पेक्ट है, not pehla, one of the aspect, that's the right kind of word, that is responsibility. So when I when I'm devoted to something, then I take responsibility of that, and when I take responsibility in every action that I do, I ensure that it does not it does not impact or come in the way of my purpose or the service. तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें तो डिवोशन इज़ अ स्टेट ऑफ लाइक, अगर मैं बोलूँ तो मोर लाइक अ मदर टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन. सो लाइक एक मदर के लिए अगर वो, ऑफ कोर्स इफ इट इज़ ऑल्सो ए पोजिशन इन द इंटेलेक्ट एज वेल, एंड शी अंडरस्टैंड दैट हर ओन वेल बीइंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू हर, और काइंड ऑफ इनएविटेबल फॉर the great quality of life for her child. So ऐसे में whatever action she takes, उसके क्या impact होंगे उसके बच्चे के हेल्थ के ऊपर, always sense of integrity, always sense of, उसको वो हमेशा नज़र में रखती है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसके किस तरीके से मेरी बॉडी पर इम्पैक्ट होंगे. इफ़ माई बॉडी remained in a bad state, then जो मेरे बच्चे की जो वेल-बीइंग है उसकी केयर है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा. then I should be careful to keep myself in good shape. So when you're in that state of responsibility,
each and every action of yours becomes very very conscious action, but without any pressure. Now because this is happening out of love. सिमिलरली आप चाहे डिवोशन भगवान की तरफ ले लो, किसी की भी तरफ ले लो, पीपल डिवाइस, किसी ने कृष्ण को डिवाइस कर लिया है, किसी ने शिव को डिवाइस कर लिया है, और मे बी somebody is doing Jesus or somebody else. So but the point is that somewhere you have the devotion. So it's not about the person जिसकी तरफ तुम्हारा devotion है, absolutely not. It's more about you. So when the devotion enters in my life, my own behaviors change. I start behaving much more responsibly, right? Moreover, I am also carrying the brand of the person to which I am devoted, person or the entity to which I am devoted. For example, if I have my devotion towards my mother, each of my action, अगर मैं कुछ भी ऐसा गलत करता हूँ कि कुछ भी ऐसा काम करता हूँ जिससे मेरी जिससे कि मेरी माँ का नाम ख़राब हो, तो डेफिनेटली अगर मुझे वो सेंस है, देन आई विल बी कॉन्शियस एनफ नॉट टू गेट इनटू समथिंग, नॉट टू डू एनीथिंग दैट गोज़ अगेंस्ट माय मदर. सिमिलरली अगर हम किसी को अपना मान लेते हैं, भगवान किसी XYZ भगवान की तरफ हमारा डिवोशन है, एंड आई एम आइडेंटिफाइड बाय एज हिज और हर डिवोटी, तो ऐसे में अगर मैं कुछ भी ऐसा एक्शन लेता हूँ जो कि सोशली, जो कि किसी के लिए ख़राब है, आई वुड से, जो कि एक अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं है ह्यूमन वेलबींग के लिए, सो डेफिनेटली आई वुड बी लाइक इट वुड बी लाइक जो ये इसका डिवोटी है और ये तो लाइक इनके डिवोटी तो ऐसे ही होते हैं, तो मेरे जिनकी तरफ मेरा डिवोशन है उनकी बदनामी होती है. एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आई विल नॉट allow this to happen. So like this happens in my subconscious, and all my actions gets devised or created out of it. Second comes ego, because devotion का एक second aspect है, my life is surrendered or is all there towards that entity. Now when my life is entirely surrendered and devoted towards a certain entity, तो उसके लिए कुछ भी करना है, that work becomes more important. I as an entity does not makes any significance. So if I need to ask for help, if I need to grab any support, I'll do it, because it's not about me, it's about the other entity to which I am have devotion for. So then devotion enters my life. I very likely, if truly it happens in my life, then I'm very likely go kind of would be letting go of my ego and would be willing to serve without any resentment. जब resentment नहीं है और एक सिर्फ पर्पस के लिए कि जिनकी तरफ मेरा डिवोशन है उसकी हैप्पीनेस मेरे लिए स्टॉप हो जाती है, तो वहाँ कोई रिसेंटमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है, एंड आई हैप्पीली लेट माई ईगो फॉल. एंड व्हेन दैट हैपन्स, माई कैपेबिलिटी टू collaborate with others becomes better. And when I collaborate with others, I don't think कि कोई भी disagree करता है कि सारी capability मुझ में नहीं होती हैं. So when I collaborate with others with their capabilities, तो ऐसे में हमारी जो quality होती है, whatever we are able to produce, वो बहुत बेहतर हो जाता है. तो definitely what we end up creating is better, और हमारा जो joy है वो बढ़ता रहता है, and we are able to collaborate well, because ego doesn't get inside us. So typically जब भी कोई किसी appropriate path में है और किसी appropriate guide के अंदर हैं, तो what they do is it's not like that you get into the path of devotion, आपने register कर दिया, or maybe you kind of started going somewhere and immediately you became you free from ego. Absolutely not. So what's going to happen is, over a period of time, this ego would get dropped by practicing certain things, and typically a good guide would eventually lead you to that path where your ego gets dropped, not not artificially, but genuinely with a purpose or intent to bring to kind of highlight or extend the service, or empower the service by making you work with others in a more collaborative, more purposeful way. So not only this changes what you create, but also it changes your experience, because the more shells we have, तो वो एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराने के बाद
उनके अंदर एक डेफिनेटली एक और से है ना एक फ्रिक्शन पैदा होता है और एक अनईजीनेस ब्रोकेज होती है, चीज़ें ब्रेक करती हैं. बट व्हेन वी बिकम सॉफ्टर बाय ड्रॉपिंग द ईगो, we quite easily get mixed up. So that really works in our life well. So once this ego happens, you see, were two things. We started working more responsibility. We our ego got diluted. So definitely both these things are going to improve our experience of life. So another interesting thing happens is, like a mother which is devoted to her children, she looks for the best thing for, of course, when in the kind of resources she has available to us for her child. Similar kind of attitude happens in our life. We try to bring perfection everything we do, because there is another thing that we are doing. One, we are taking everything that we are doing as a service, as if like, so one of the approach of the devotee is, whatever I am doing is happening, whatever work I am doing, whatever kind of situations I have been put in, that has been happening from the wish of my master or whosoever I am devotee of, which means everything becomes the work of not mine, everything becomes the work of somebody who I am devoted to. And in that kind of a mindset, when everything that I do is a work of somebody who I am devoted towards, perfection becomes a natural way, because when a great devotee is like a great servant who wants the best for his or her master. So ऐसे केस में perfection becomes your way of life. Whatever you do, you do. Of course, when you're in that state of, it's not like, as I said again, that as you enter you will be in that shape, but yeah, over a period of time this should get into. If it is not happening, then definitely you are not on the right kind of path, or your guidance or the system that you are in is not working for you, or maybe you're not really participating the way you should have been participating. Otherwise, if these things are not happening in your life, trust me, the whatever path of devotion you are on, very likely that that's somewhere there's something wrong. Either the path itself or the system itself is not efficient or valuable, or you are not giving yourself 100% into the system. Only then these kind of things happen. Otherwise, perfection, responsibility is perfection and responsibility are the very, and like dropping of the ego, letting go of the ego, are very natural things to happen. Moving ahead from there, once the perfection and all these things are happened, now there is another interesting thing, that is acceptance. So what really happens is कि जब कभी आपने इस तरीके से काम किया, chances are with कि आप when you're collaborating well, you're acting out of responsibility, you have a sense of perfection in it, and you everything is driven by the purpose, and you have a mindset that everything is being done and I'm being put in by that XYZ divine power for me to get into this, to do whatever am I doing. So acceptance becomes a natural consequence, which means whatever outcomes happen, I accept those outcomes, because these are the ones that are that's kind of as per the will of my master. So मल्टीपल एडवांटेजेस. एक तो उस तरह के काम करने से, उस तरीके के एटीट्यूड से पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस बिकम्स हायर, और आई वुड से व्हेन आई सेड सक्सेस मीन्स द being able to create the results that I wanted to create, that becomes higher. दूसरा जो उसमें एक एडवांटेज है वो ये है कि क्या बोलते हैं, अगर ऐसे रिजल्ट्स आए जो कि मैच नहीं करते हैं उससे जो हम चाहते थे, एंटिसिपेट, देन यू से माई मास्टर नोज बेटर देन मी, एंड if a result that has happened which is not as I anticipated, that must have happened from the will of my master. In that particular case, ये once again it becomes very powerful, your acceptance grows higher, and then instead of getting stuck in the past, you just accept the results and move on. Which means अगर हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे पहले रिजल्ट्स को, और वहाँ पर हम अटक जाते थे उनके अंदर, और अपनी एनर्जी का बहुत बड़ा पोर्शन, ऐसा क्यों हो गया और ये ख़राब क्यों हो गया, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस सारे सिचुएशन से बाहर आने के बाद it's kind of easy for me, right? I just learn from it and move ahead, and this allows me to conduct the next
असाइनमेंट्स और नेक्स्ट वर्क बेटर. सो इस तरीके से जब मैं चलता हूँ तो एक्सेप्टेंस मेरी बहुत बेटर हो जाती है, एंड दैट लीड्स टू वंस अगेन very very good quality of results in my life. Of course, when I said, like as I said always, so success जो है वो एक उसका definition भी बदल जाता है. Success is just means just doing what should be done with full energy and full commitment and full preparedness and full awareness. That's really it. So काम वही हो रहा है जो नॉलेज से होना था, बट यहाँ पर हमारी एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गई, और इसमें बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है बिकॉज हमारा ईगो वाला पोर्शन इसमें बहुत डाइल्यूट हो जा रहा है, और उसकी वजह से हमारे लिए इसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाते हैं. क्योंकि ईगो का जब भी सेक्शन रहता है तो हमारा कोलैबोरेशन बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, और उसके अलावा भी जो रिजल्ट्स की एक्सेप्टेंस है वो भी लो हो जाती है. सो द काइंड ऑफ एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड. So overall, the process of devotion can be wonderful provided it is done with a slightly with intelligence. Without intelligence, if you just blindly follow, for the superficialness, or the not superficialness, for the entertainment part of it, it's going to be dangerous. And most people get stuck because वो devotion में जाने के बाद भी, because most of the time the guidance is not that strong, तो ट्रैप में फंस जाते हैं डिवोशन में भी. सो आई होप कि जो इसको डीपली समझ पाएगा वो डिवोशन को अपने एडवांटेज के लिए, अपनी लाइफ को एक अमेजिंग शेप देने के लिए और अपने एक्सपीरियंस को क्राफ्ट करने के लिए यूज़ कर पाएगा. एंड लाइक इट्स जस्ट सच अ वंडरफुल थिंग टू रियली प्रैक्टिस. अनदर इंटरेस्टिंग थिंग हैपन्स इज़ कि एज ए सेड कि सारा जब जिस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं तो सक्सेस और बिकम्स नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, और आपका एक्सपीरियंस भी अब बहुत बेहतर हो जाता है. तो ओवरऑल यू काइंड ऑफ से कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है जिसकी तरफ डिवोटेड हो, वट एवर एंटिटी दैट इज, एंड दैट स्ट्रेंथन्स योर faith once again, and because of this higher faith your actions becomes much more powerful again. So it becomes a cycle of empowerment. Again and again you're getting stronger and stronger, your faith becomes stronger. And of course, if because there's a long sequence of things, it's hard for people to relate to it, but overall it becomes amazing. Now I said, after all this is a powerful part. It requires surrender because you need to expose your vulnerabilities, and you need to collaborate more. And because surrender is one thing, that surrender to the competent guide towards or to the process is one thing that is fundamental to it, which makes you more like a more like a goat in the whole ecosystem. And there are definitely people who are observant, who are not observant, who are kind of hunting for these kind of goats. So being aware that against whom or before whom you need to expose yourself as a goat, or before whom you need to protect yourself with the shells, is an important thing. Because if it happens in the wrong environment, then devotion can be dangerous, and instead of setting free, it's going to take you to the to the other way around. आपका experience further खराब हो जाएगा, and you may get entrapped. This is really it for now. And I'm sure I'll be covering up many more topics as we go along. This is it for now, and looking forward to to hear your comments, get to know more from you. And yeah, I mean, if there is anything that you want to differ and you want to get clarity on, or I mean, I'll be more than willing to listen from you and interact with you. Now, bye bye, see you next time.